हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ्स discussing important keywords and definitions of chapter 6, that is lines and angles of class 9th mathematics. This is part B. We already have discussed part A in our previous video. This is very, very important, students. So here is first parallel lines and pair of angles. The definition of parallel lines and what is the relation between the angles formed by a transversal and parallel lines. So lines are parallel if they are always the same distance apart, called equidistant, and will never meet. दो लाइन जिनके बीच में वो जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है और जिनके बीच में हमेशा ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन this equal to this, the two lines which this line is L and this line is M, either you produce right hand side or left hand side. आप इन दोनों लाइंस को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड किधर भी प्रोड्यूस करें, ये लाइन दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines is everywhere same. These two lines, means this line and this line, these two lines are also parallel because they never intersect. तो parallel lines वो lines हैं जिनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है और वो कभी मीट नहीं करती हैं, कभी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देन ट्रांसवर्सल में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल। सो अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन और लाइन सेगमेंट which intersects or join to distinct means different lines. The different line can be parallel or non-parallel at two distinct points. This is very, very important here. इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो देखिए ये दो लाइन है। These two lines, one line is L here. I'm marking here. This line is L. This line is M. And this line is T. T stand for transversal. देखिए ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये L और M टू डिफरेंट लाइंस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। At one point is this and other point is this. So this T is transversal. Transversal वो लाइन या लाइन सेगमेंट है जो टू डिफरेंट लाइंस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट या क्रॉस या कट करती है। This point is let A and this point is B. So this line T is transversal. ये जरूरी नहीं है कि ये जो दो लाइंस को जो पैरेलल लाइन होगी तब ये ट्रांसवर्सल होगी। See here, L and M are not the parallel lines here, and T is intersecting these two lines at two distinct point. That is why T is a transversal. See here, ये दो लाइन यहाँ पे let this line is P, this line is Q. ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन इनको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लेट दिस पॉइंट इज C and this point is D, so that line is also transversal. ट्रांसवर्सल के लिए जरूरी ये है कि ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। लेट दिस लाइन इज 1, दिस लाइन इज, these are two lines. Let this line is X and this line is Y. ट्रांसवर्सल के लिए जरूरी है कि देखिए ट्रांसवर्सल, yes, this line is a transversal. This line is transversal because intersecting at two distinct points. That is also transversal क्योंकि ये भी two distinct point पे intersect करती है X और Y को। लेकिन but you will see here that this line is not a transversal क्योंकि ये एक ही point पे X और Y को intersect करती है। So this is transversal, but this line is not a transversal. ट्रांसवर्सल के लिए जरूरी है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो देखिए दे लेट दिस लाइन इज L, दिस लाइन इज M, दिस रेड लाइन इज इंटरसेक्टिंग हियर एंड हियर, सो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल।
This line is later D line. This line is intersecting at this M and this point. So this is also transversal. So transversal means a line or line segment which join or intersect to different line at a two distinct point. Yes, these are two lines, and this line is joining this. Let this point is A, B, C and D. ये दो लाइन है और ये AC इन दोनों लाइन को ज्वाइन भी करता है, तो ये AC लाइन हो गया हमारा ट्रांसवर्सल. सो ये जरूरी नहीं है कि ये क्रॉस करके लाइन ही बने. इट इज अ लाइन सेगमेंट. This is also a transversal because you can produce this line this side or this side. Okay. Now the pair of angles. If a transversal intersect two parallel lines, then 8 angles are formed. जब कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल, अब हम केवल पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, जब कोई पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है या कैसे भी लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. देखिए ये दो लाइन हुई, ये आपकी ट्रांसवर्सल हुई. दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज एल एम. So angle number 1, angle number 2, angle number 3, 4, 5, 6, 7 and 8. When a transversal intersect two parallel lines or non-parallel lines, then 8 angles are formed. 8 एंगल बनते हैं. These angles can be made into pairs of angles which have special name. ये इनमें काफी रिलेशंस होता है, इनके पेयर्स में स्पेशल नेम है. वो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. See here. First of all, later these I have taken some pictures from net. So these two lines are given here. Let this line is L and this line is M. These two lines are parallel lines. So this line is actually transversal. This yellow line is a transversal line. Transversal means वो लाइन या लाइन सेगमेंट जो दो लाइंस को, यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस मींस कंसीडर कर रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, दैट इज व्हाई दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल. पहले हम ट्रांसवर्सल का पता लगाएंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है. Then here are the parallel lines. This line, let this line is L, this line is M. ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल के लिए हम एक एरो का सिंबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी लाइन पैरेलल. तो सी हियर, L is parallel to M. The line L is parallel to M, and let this line T is transversal, right? So L and M, these two lines are parallel here. Then vertically opposite angles. We know that when two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. So here, angle A is equal to angle B, vertical opposite angle. Angle C is equal to angle B, so you can write angle B is equal to C. Further, this A is equal to H, so A angle is equal to H, and angle G is equal to angle F. ये vertically opposite angles equal होते हैं, so that is what it is not vertical, it is vertically opposite angles, students, right? Yes, these are equal. Now very important, corresponding angle axiom. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. देखिए, corresponding angles equal होते हैं, और ये एक्सियम है. एक्सियम्स का मतलब होता है बेसिक फैक्ट टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ. जो बेसिक फैक्ट है जिनको प्रूव करने के लिए हमें किसी प्रूव नहीं करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्सियम. और ये ट्रांसवर्स, ये है corresponding angles एक्सियम. देखिएगा यहाँ पे at this transversal T intersecting line L and M, and these two lines are parallel, means N line is parallel to M line. Then see here, okay, these are two lines and this is transversal. Let this line is L, this line is M, L is parallel to M, and this line is transversal. These angles forming one angle number 1,
angle number 2, angle number 3, angle number 4, angle number 5, angle number 6, angle number 7, angle number 8. स्टूडेंट्स एंगल को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन राइट, यू कैन गिव द नंबर्स टू द एंगल, यू कैन गिव सम द वेरिएबल, लेट्स सी एंड जी, इट इज लाइक दैट, और आपको प्रॉपर्ली भी लिख सकते हो। देखिए ये जो इसमें एंगल्स बन रहे हैं, देख पहले हम इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तलाशेंगे। देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो वी कैन से angle number 1 is equal to angle number 5 because these are corresponding angles. ये corresponding angles equal क्यों है? Because of corresponding angles axiom. Because corresponding angles axiom says when a transversal intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal. So angle number 1 is equal to 5 also. Angle number 2 is equal to angle number 6. Angle number 2 is equal to angle number 6. Angle number 3 is equal to angle number 7. We can write here angle number 3 is equal to angle number 7. And angle number 4 is equal to angle number 8. Angle number 4 और angle number 8 भी equal है, क्योंकि ये सारे के सारे ये है corresponding angles को फॉर्म कर रहे हैं, और corresponding angles equal होते हैं by corresponding angles axiom. I think it is clear to you. फिर से एक बार देखिए, angle A is equal to angle E, angle B is equal to angle F, angle C is equal to angle G, and angle D is equal to angle H. ये corresponding angles हैं, pair of corresponding angles हैं, और इनका measurement हमेशा ही equal होता है. The corresponding angles are always equal. Then very important here, if a transversal intersects means two parallel lines, then corresponding angles will be equal. क्यों equal होंगे? Because we know that because of corresponding angles axiom. Now alternate interior angles are also equal. Interior angles, देखिए पहले मैं इसको शो करता हूँ. See here, angle number 1, angle number 2, angle number 3, angle number 4, angle number 5, angle number 6, angle number 7, and angle number 8. That is very very important, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. अब हमें ये प्रूव करना है कि alternate interior angles are equal, means we have to prove for the second, to prove angle number 4 is equal to angle number 6 and angle number 3 is equal to angle number 5. Alternate angles. Alternate का मतलब होता है एक छोड़ के एक. I visit the doctor on alternate days. मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डॉक्टर से मिलने जाता हूँ. या तो इसका मतलब है कि एंगल नंबर 4 उसका अल्टरनेट हुआ एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 3 उसका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ एंगल नंबर 5. देखिए ये जो 3, 4, 5, 6 ये 4 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर लाई करते हैं. एंगल नंबर 1, 2, 7, 8 दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, ये बाहर की तरफ बनते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. देखिए तो इसके लिए हमें पहले से ही पता है. सी हियर वी ऑलरेडी नो दैट angle number 1 is equal to angle number 5. You know why? Because these are corresponding angles. ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5 ये corresponding angles हैं, राइट? और corresponding angles हमेशा इक्वल होते हैं. एंगल नंबर 3 is equal to angle number 1. These are vertically opposite angles. See here. This angle number 1 is equal to angle number 3 because these are vertically opposite angles here. So see here, therefore angle number 1 is equal to angle number 5 is equal to angle number 3, or angle number 5 is equal to angle number 3, and that is proved. Angle number 3 और angle number 5 equal हो गए. Similarly, we can say एंगल नंबर 6 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 हो गया. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. एंड नाउ
We can also go for the next. We have to prove that alternate exterior angles are equal. तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं. Yes. Yes, see here. Second part है alternate exterior angles are equal. Exterior angles means that is third part here. Third part में देखिए, angle 1 should be equal to 7. We have to prove angle number 1 is equal to angle number 7 and angle number 2 is equal to angle number 8. These are alternate exterior angle. और हमें ये प्रूव करना है कि इनका मेजरमेंट इक्वल है. See here, angle number 4 is equal to angle number 8. You know why? Because again these are corresponding angles. Angle number 4 is equal to angle number 8. These are corresponding angles. Corresponding angles equal होते हैं when a transversal intersect to the line, and angle number 4 is equal to angle number 2. These are vertically opposite angles. See here, angle number 4 is equal to angle number 2. So we can say angle number 4 is equal to angle number 8. Angle number 4 is equal to angle number 2. So therefore, angle number 2 is equal to angle number 8. Angle number 2 is equal to angle number 8. ये हमें प्रूव करना था. That is true. और हम लिख सकते हैं similarly, angle number 1 is equal to angle number 7. तो ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 7 ये भी इक्वल होंगे. तो ये थर्ड प्रूफ हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. कब? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, द लाइन शुड बी पैरेलल. ये तभी इक्वल होंगे जब कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है. एंड नाउ द फोर्थ पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. We have to prove that the sum of two consecutive angles on the same side of the transversal is 180 degree. Yes. So now fourth part here. See here. अब हमें प्रूव करना है फोर्थ पार्ट को कि बताना है कि the sum of two consecutive angles. Consecutive here it is better to write consecutive interior angles. On the same side of transversal is 180 degree. Means we have to prove. हमें ये प्रूव करना है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रूव. देखिए, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 is 180 degree. Also एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 6 is equal to 180 degree. देखिए, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 ये दो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल इज दिस. यस. और ये एंगल 3 और एंगल नंबर 6 ये भी सेम साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और हमें ये इनको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं. एंड वी हैव टू प्रूव दैट देयर सम इज 180 डिग्री. सो हाउ टू प्रूव? प्रूफ. सी हियर, what is the sum of angle number 1 plus angle number 4? That is 180 degree, because forming linear pair. Linear pair देखिए, which angle? Angle number 1 plus angle number 4. Angle number 1 और angle 4 का sum 180 degree है, क्योंकि ये दोनों एंगल linear pair हम इसे straight line फॉर्म करते हैं. And now in place of angle number 1, can you write angle? But angle number 1 is equal to angle number 5, because these are corresponding. ये दोनों एंगल corresponding angles है. So now in place of angle number 1, you can write here angle number 5 plus angle number 4, that is 180 degree. So see here, angle number 4 plus angle number 5 is 180 degree. यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल 4 plus 5 होगा, जो को इंटीरियर एंगल है,
वो टू इंटीरियर एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, उनका सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. सिमिलरली angle number 3 and angle number 6, they are also the interior angles, consecutive interior angles on the same side of transversal is 300 of the transversal, that is angle number 3 and angle number 6, their sum will also be 180 degrees. So similarly, angle number 3 plus angle number 6, their sum is 180 degree. तो देखिए हमने ये चार बातें यहाँ पे देखी कि if a transversal intersects two parallel lines, then number one, corresponding angles will be equal. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है because this is by corresponding angle axiom. Number one, then two, alternate interior angles are equal, then alternate exterior angles are equal, then the sum of two consecutive interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. और एक्सरसाइज 6.2 में इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं. So now see here, these are alternate angles, means this angle is equal to this angle. Alternate angles हमेशा equal होते हैं. तो देखिए ये एंगल D will be equal to E and angle C will be equal to angle F. Right? Here the angle C will be equal to angle F. These are alternate interior angles. These are also alternate interior angles. These two lines are parallel. Again, now alternate exterior angles. देखिए ये वाला angle A that is equal to H and angle B that is equal to G. Angle B is equal to angle G. Angle number A is equal to angle number H. And we also have proved that alternate exterior angles are also equal if a transversal intersects two parallel lines. अगर कोई transversal two parallel lines को intersect करती है तो alternate exterior angles भी equal होंगे, alternate interior angles भी equal होंगे. Then consecutive interior angles, consecutive देखिए बिल्कुल just आने वाले angle C and angle E, क्या उनका क्या सम होगा 180 डिग्री. Angle D plus angle A, what will be their sum? That is 180 degree, because we know that if a transversal intersects two parallel lines, then the sum of two consecutive interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Next, see. अब आपके पास ये आता है कि हाउ टू टेस्ट दैट द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट पैरेलल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर आर फोर वेज, चार तरीके हमारे पास हैं, चार मेथड्स हैं कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है. तो पहले तो ये है कि कोई भी लाइन पैरेलल है या नहीं है, उसके लिए आपके पास ट्रांसवर्सल होना जरूरी है कि इफ a transversal joins or intersect two lines, ये ट्रांसवर्सल है. और जैसे ही ट्रांसवर्सल हुई उसके साथ 8 एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे. एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. इनमें अगर नंबर 1 if corresponding angles are equal, then the two lines are parallel. Number 1, corresponding angles means if angle B is equal to angle F, or angle A is equal to angle E, or if angle this C is equal to angle G, or if angle H is equal to angle D, if corresponding angles equal हैं तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी. Angle A is equal to E, right? Number 2, और अगर ये ऐसा नहीं है तो देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल. अगर आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो भी दो लाइंस पैरेलल हो जाती है. देखिए इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ऐसा हो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल E हो, तो भी दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल. नंबर 1 ये तरीका हुआ. नंबर 2, अगर ऐसा भी नहीं है then if corresponding means alternate exterior angles are equal. Let's see here. देखिए exterior angles means if angle A is equal to H,
और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होए तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज, you will see here, what is next here? If the sum of two consecutive interiors on the same side of the transversal add up to, or their sum is 180 degree, then the two lines will be parallel. देखिए, अगर D और F का sum, if angle number D plus angle number F is 180 degree, or angle number C plus angle E that is 180 degree, तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारे पास स्टूडेंट, देयर आर 4 ways to prove means two lines parallel. So how to prove? Number one, if a transversal joins or intersect two lines, and number one, if corresponding angles are equal, or if alternate interior angles are equal, or if alternate exterior angles are equal, or if the sum of two consecutive interior angles on the same side of the transversal is 180 degree, then the two lines are parallel. ये बहुत जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि बार बार हमें प्रूव करना पड़ेगा this is parallel to this line is parallel to this line. So there are 4 ways, please keep in mind. And now examples. These lines are parallel. Why these lines are parallel? This line is L, this line is L. L is parallel to M because corresponding angles are equal. Because corresponding angles are equal, that is why the two lines are parallel. Example number 2. These lines are not parallel because we know that this angle and these two angles are the two interior angles on the same side of transversal, और उनका सम होना चाहिए 180, और उनका जो सम आ रहा है that is 81 plus 101, that is 182 degree. तो 182 नहीं होना चाहिए, exactly it should be 180 degree, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा. If the sum of two angles on the same side of transversal means the sum of two consecutive interior angles on the same side of transversal is 180 degree, then the two lines are parallel. So this line is M, this line is L. These two lines are not parallel. Parallel line को आप कट कर दीजिए तो ये सिंबल बन जाता है for not parallel. Next example, see here. These are alternate interior angles and their measurement is same. That is why the two lines are parallel. This line is L, this line is L. So line L is parallel to M. What is the reason? The reason is alternate interior angles are equal. Now, one by one, see here. Example number 1, and some options are given with full given. The straight lines AB and CD. देखिए दो लाइंस यहाँ पे दे रखी है, AB, this line is AB, this line is CD. क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? हम चेक करते हैं कि पैरेलल है कि नहीं है. देखिए these two angles are alternate interior angles. 108 is not equal to 110 degree. It means alternate interior angles are not equal. That is why the two lines are not parallel. So we can say that these two lines are not parallel because the two given alternate angles are not equal. So D is the correct option here. Yes. Here, these two lines are parallel, AB and CD. It is given in the question that line AB is parallel to CD. ये देखिए ये यहाँ पे ये given है. And E, this line EH is transversal. AB line and CD line, these two lines are parallel. ये दो parallel line है. E और H इनको 2 पॉइंट्स F और G पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ट्रांसवर्सल हुई. अब बताइए कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल EFB. EFB, तो सी हियर
This angle will be 54 degree. The reason is corresponding angles, right? And we know that this angle and this angle, 54 plus angle EFB, their sum will be 180 degree. You know what is the reason? The reason is they are forming a linear pair. That is why angle EFB is 180 minus 54. आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, that will be 126. So B is the करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप एनटीएससी के लिए अपेयर होते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम दिस क्वेश्चन, सी हियर, E and F, AB and CB are parallel. It is given that this line is parallel to this line. It is given. And we have to find out the measurement of angle AFG, means this angle. See here. Student, this angle will be, because these are forming angle DGF plus 190 degree. It should be 180 degree because they are forming a linear pair. So angle DGF is equal to 180 minus 119. Would you tell me what is the answer of this question? This will be 61 degrees. So that is 61 degrees. And we know these two angles are alternate interior angles. That is why angle AFG is equal to angle DGF. These are alternate interior angles, so its measurement is also 61 degree. So that will be also 61 degree. So C is the correct option here. Yes, AB and CD are again parallel, and this line EH is transversal, intersecting the two lines at F and G. What is the measurement of angle DGH? Yes, this angle. We know this angle is equal to 133 degree because these are corresponding angles. ये जो angle है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही corresponding angles है, and we know now angle DGH plus angle DGF, their sum is 180 degree because of linear pair. So angle DGH plus 133, that is 180 degrees. So angle DGH is 180 minus 133. Would you give me the answer? What is the answer of this question? That will be 47. So A is the correct option here. Next question. ST and UV are parallel. This ST, this line, and these two lines are ये दोनों line parallel है. देखिए, this line is parallel to this line. C and E, this angle is C, this angle is E. ये कैसे angles हैं? These are alternate interior angles. No, no, no. These are not alternate, क्योंकि alternate तो ये और ये होते, ये हैं consecutive interior angles. ये आपने किया, ये जो दोनों एंगल है ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। अगर यूं होता तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो द आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। दिस इज नॉट द आंसर। यस, ST and UV are two parallel lines. We can
these are two parallel lines, और ये जो एंगल है G and F, this angle is G and this angle is F. कैसे एंगल्स हैं ये? These are vertically opposite angles. So these are vertically opposite angles. You also have to write here opposite angles. So C is the correct option here. ST and UV are parallel lines. Again, these two lines are parallel. This line is parallel to this line. And D and E, this angle is D and this angle is E. ये कैसे एंगल है? ये एंगल और ये एंगल कैसा है? These two angles are alternate interior angles. So B is the correct option here. ST and UV are again parallel lines. D and H किस तरह के एंगल हैं? This angle is D and this angle is H. These two angles are consecutive interior. No, these are corresponding angles. ये two parallel lines है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल corresponding angles होते हैं. And corresponding angles are always equal if the transversal intersects two parallel lines. Question number 9 here. X, we have to find out PQ and RS are parallel lines and TW is transversal. This is TW is transversal. And the measurement of this angle is x plus 12 and measurement of this angle is 3x plus 48. So we know that this angle will be equal to this angle because corresponding angles. So that is x plus 12. Now, the sum of these two angles will be 180 degree because of linear pair. So x plus 12 plus 3x plus 48, that is 180 degree. 4x plus 60 is 180 degree. 4x is 180 minus 60. 4x is 120. X is 120 by 4, that is 30. लेकिन हमें पूछा है what is the value of x? So C is the correct option. The value of x is 30. And now next question. Angle, this angle EFB is 2x minus 100 and this angle CGF is x plus 52, and then we have to determine the angle EFG. This angle will be 2x minus 100 because these are corresponding angles. Now the sum of these two angles will be 180 degree because they are forming a straight line or forming linear pair. That is why 2x minus 100 plus x plus 52 will be 180 degree. 3x minus 48 is equal to 180 degree. 3x is 180 plus 48. 3x is equal to 8. 2 to 8. So 3x is equal to 2 to 8 and x is equal to 228 by 3, that is 76. And हमें पूछा है ये बताइए कि एंगल EFB. Angle EFB is twice of x minus 100. That is 2. In place of x, you write 76 minus 100. That is 152 minus 100. That is 52. So angle EFB will be 52 degree and B is the correct option here. And students, the summary again, आप फिर से इसको देखिएगा कि हमने इस पूरे
लेक्शन में, पूरी वीडियो में, पूरी क्लास में क्या किया है कि if a transversal intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal. Number one, interior alternate angles are equal. Then exterior alternate angles are equal, and the sum of two consecutive interior angles on the same side of the transversal means these are co-interior angles, that is 180 degree. Number one. और नंबर टू, जब दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो कैसे उसका टेस्ट करते हैं? If a transversal intersect two lines and if corresponding angles are equal, then the two lines are parallel. If alternate interior angles are equal, then the two lines will be parallel. Or if alternate exterior angles are equal, then the two lines will be parallel. Or if consecutive interior angles on the same side of transversal add up to 180 degree, then the two lines will be parallel. So thank you, students. That's all.